Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news and editorial analysis, where I'll be covering some of the important news from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed today. And additionally, I'll be providing some important points so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 19th of May. The first topic is planning for future waves of the pandemic. This is an editorial reported in the Hindu. Second is data of COVID infection population in India. Third, US to send 80 million vaccine abroad. The second last topic, new naming system of the virus variant. And the last is a roadmap to overcome the pandemic challenges. So these are some of the important news from today's newspaper. And apart from this, there would be some MCQs question at the end of this session. And these are based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination. And before I proceed with the news analysis, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. Now, starting with this session, first we'll start with the editorial today, that is planning for the future waves of the pandemic. This editorial has been reported in Hindu and talking about its relevance for the mains examination, important for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors, right? So mostly the point that I'll be discussing in this editorial context would be more important for your mains examination. So we'll see that what are the things that I'm going to discuss under this editorial. So precisely talking about the theme, इस पूरे editorial में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, that is talking about the planning for future waves of the pandemic, how the government of India could plan so that we do not have any other waves, that is already being anticipated by the expert. So ऐसा कहा गया है कि थर्ड वेव आ सकती है इंडिया में, एंड सम एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज आर आल्सो आर्ग्यूइंग दैट इट हैज ऑलरेडी started in India, but until and unless we have official confirmation, we cannot make out anything. Now, under the subhead of this editorial, मैं कुछ important subheads पे आपके साथ डिस्कशन करूँगा. So first is the surveillance strategy or failure that government has failed. Second is the need for containment and mitigation measures. Third is strengthening the surveillance system. Fourth, mitigating the vaccination of the population, how the vaccination can be done, जो पूरी vaccination process है उसको किस तरह से लेके चलना है. And the last is need for the robust public healthcare workforce. So this would be the way forward or the conclusion that we will be going to conclude. So starting with each topic, we'll see one by one. सारे heads को एक करके देखेंगे. So what has actually happened, that government has failed to plan and prepare the multiple wave in the COVID-19, right? And that has resulted to the despair, helplessness that we are seeing today. If you give an example, the oxygen supply that we have seen in Delhi and Mumbai, that was again a misplanning by the government of India and the state government. Now, says more waves are expected from the expert, even from WHO. They have already made a presumptions that definitely a third wave could be arising in India. So, what lesson we can learn from the present order? ये बहुत ही ज़रूरी है, because every time a country like India, which is having a 130 million population, cannot commit a mistake, right? इस तरह की mistakes और हम अपने जो citizen है उसके साथ experiment नहीं कर सकते हैं. Now, some surveillance faults that has been seen, because of which the government has not predicted it well. तो कुछ जो surveillance measures है वहाँ कहाँ fault रही है. So the main reason why government failed to predict the second wave is the unavailability of clear data, right? Data का issue बहुत ही ज़्यादा अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में आपने देखा होगा. And some of the important virologists, the committee को जो head कर रहे थे, उन्होंने भी अभी resignation दी है अपनी. So many other scientists, 90 scientists have wrote a letter to the Prime Minister asking them to share the data so that they can predict that what could be the possible wave, किस तरह से हमें contain करने की ज़रूरत है, but they are not being provided with the adequate data. So this is the biggest challenge that as of now our scientists and experts are facing.
So the unreliable testing and under-reporting of the cases, even the death in some states like Uttar Pradesh are not reported well. Even अपने news में भी देखा होगा, you have been coming across the news that Bihar and Uttar Pradesh have not reported the exact number of deaths, right? So you can see the situation of this country at a time when we are facing such problem, the government is busy in doing something else, right? Now under reporting की अगर बात करें, manipulation of data, that is giving a fault projections, because बहुत सारे ऐसे states हैं जहाँ पे actual death जो देखी गई है that was around 900, but the state chief secretary or the state authorities have only given a report of 13 people. I'm talking about Bihar as an example, right? So the central and the state government should use a real-time data by encouraging a reliable reporting. और इस तरह की अगर ऑथेंटिक डेटा ऑलरेडी एक्सपर्ट्स के पास होगी तो वो कुछ कंक्लूसिव बाद में बता पाएंगे, एक प्रेडिक्शंस कर पाएंगे कि हाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर पेंडेमिक. Now, this is the time to have a standardization definition and how many cases are expected to have per million. But the strange part of country like India, when we were, जब हमारी सबसे बड़ी ताकत होती थी कि हम 130 मिलियन के पॉपुलेशन है या 1.5 करोड़ से ज़्यादा की हमारी आबादी है, but at this point of time, when government have to do something, they are lacking behind. So you can see the prime ministership of Mr. Narendra Modi has completely failed to contain this. I'm not just trying to criticize the government, but this is the reality that government has definitely failed to contain this virus. They have failed to make a planning, right? So you can share your video in the comment section. What do you feel that how did the government have contained it well, but it could we have done more better? Now need for the containment and mitigation measures अगर बात करें, so the COVID-19 trajectory is another country that shows there would be multiple waves in the country. ये एक जो मिटिगेशन मेजर्स हैं इसमें अगर बात करें जो एक्सपर्ट्स कमेटी है, they have already detailed कि मल्टीपल वेव्स आ सकती है इंडिया में, जिस तरह से जापान में हमने देखा था. द हेल्थ सिस्टम इज क्रम्बलिंग देयर because of the fourth wave, and India has already seen second wave. World with the national wide हमने second wave देखा. कुछ states like Delhi and Mumbai they already have third to fourth wave, but nationally we are only witnessing second wave. तो और कोई wave ना आए इसके लिए हमें predict करने की ज़रूरत है, हमें contain करने की ज़रूरत है, हमें उसे mitigate करने की ज़रूरत है. Identifying the impending wave is very important, and mitigating them as a catastrophe would be something that government of India would be looking forward to do that. Now, India has missed the containment and mitigating measures. I'm talking about the central government, because they in India, see that there are two major points that people are actually not aware of. एक तरफ बात की जाती है कि जो health है that is a state issue, right? State subject है. दूसरी तरफ इंडिया में पूरे वर्ल्ड में, आई मीन टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकली अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, मैं सिर्फ इंडिया के कंसर्न में बात कर रहा हूँ. सो यहाँ पे NDMA एक्ट लगी हुई है, राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. Now, in this act, when a nation is there in the act, the whole authority come under the central government. So now the role of the state government become restricted, right? वहाँ पे बहुत सारे restriction है. So if any problem arises या कुछ इस तरह से faults दिखती है तो सारी जिम्मेवारी central government की होती है, right? But the government is refusing to take the responsibility, right? So even the Maharashtra that have seen in the cases such in the second wave of the COVID-19, they do not have understand how they would be doing it. So यहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम containment measures को एक अच्छे से place पे रखें. Now this is the second, this lesson should be incorporated in our plan for the future waves. And in states like Delhi and even Maharashtra, they are well prepared to overcome this problem because they have seen almost third to fourth wave. Especially talking about Delhi, in Delhi we have seen fourth wave, right? Now the government is although focusing on building more and more ICU beds and hospitals. They would be not definitely the permanent hospital, they would be the temporary hospitals. Now strengthening the surveillance system, this is what advice has been given by the editor that हमें अपनी जो surveillance system है उसको strengthen करने की ज़रूरत है. A strong surveillance system is reported for the minimum number of cases, और ये जो reliable markers होती हैं, ये खास करके जो data है वो बहुत सारी information हमें दे सकती है. Review mechanism should be strengthened to detect the outbreak in the initial stage. उसके अलावे एक जो anguish है of the pandemic spread to the other areas, जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हमारे पास एंटिग्विश, मतलब वी कैन स्लो इट डाउन, राइट.
Now, the concurrent genome sequencing is a real time in a fixed proportion of the sample that can give the idea. So, genome sequencing is also helping India to actually predict the number of the cases and future outcomes of it. Now, vaccinating the mass, the only and only solution across the world, across the globe, and all important agencies like WHO have already said that this is the only measures that we can have. सो पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली अगर वो चाहें तो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब पे क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ मेक इन इंडिया प्रोग्राम. सो व्हाट वी नीड टू डू, जितने भी फॉरेन कंट्रीज के मतलब बाहर के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है. दे नीड टू कोलैबोरेट सो दैट दे कैन कम टू इंडिया और दे कैन शेयर देयर आइडियाज़. राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बट वो अपने आइडिया शेयर करके अपने कंट्रीज में ही बना सकते हैं. राइट, सो दिस इज अगेन समथिंग important initiative that government could take, and India could emerge as a world biggest exporter of the vaccine, right, and helping the other country as well. अगर इस तरह की कोलैबोरेशन हो जाती है तो मास प्रोडक्शंस में अगर वैक्सीन हो और इंडिया के लोगों को अगर वैक्सीनेट कर दी गई पहले, first and foremost we have to see our citizen, then we can move ahead with giving the vaccines to other country. Now, India can become a soft power in facilitating faster manufacturing and helping the Indian industries also. Now, whenever a new variant is emerging, this is causing a concern. It is important to update the vaccine depending upon how virus changes, right? So we have seen multiple level of mutation that has undergone in the COVID-19 virus. Now, this provide a clear case of good example opportunity जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम काम कर सकते हैं. दिस वुड बी द क्लासिकल एग्जाम्पल, लाइक जिस तरह से डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट किया इन मेकिंग द DG2, जो 2DG है, जो ओरल ड्रग्स हैं, दैट वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड रिसेंटली. तो उस तरह की चीज़ें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कर सकती हैं. Now, need for a robust public healthcare workforce. This is a suggestion that has been given in this editorial. तो कहा गया है कि rapid spread of जो COVID-19 है, they have shown the importance of time and efficient healthcare support, और healthcare response जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. And it is important to enhance the surveillance. No, we have been talking a lot about surveillance. This surveillance will help to detect and contain the future wave, expand our vaccination process, and work to build a robust and पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लान. राइट, और यहाँ पे कंट्री को ज़रूरी है वन हेल्थ के जो प्रॉपर एजेंडा है उसके साथ आगे बढ़ने की, सो दैट वी कुड इंश्योर एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ गिविंग द सेम प्रायोरिटी एज ह्यूमन हेल्थ. व्हाट वी हैव सीन व्हाई दिस COVID-19 हैज अराइजन ओनली बिकॉज ऑफ the eating habit that have changed, because in China in the wet market, वहाँ पे एक wet market है, आप YouTube पे देख सकते हैं, you can find that. So wet market is there. The people started eating any sorts of animal they can come across. They are eating bats, they are eating squirrels, everything. You know, in China we cannot predict what they are going to eat. So this is completely disturbing the food chain, and this is ultimately letting the problem in the humanity. तो इस तरह से वन हेल्थ जितनी ज़्यादा ह्यूमन के लिए ज़रूरी है उतनी ज़्यादा एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है. एंड वी कैन ओनली फाइट बेटर व्हेन वी हैव एन रेडी पब्लिक हेल्थ केयर वर्कफोर्स. सो हाउ वी वुड हैव वर्कफोर्स, क्या रेशियो है, किस प्रपोर्शन में हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर होने चाहिए. सो कंट्री नीड टू रीइंफोर्स द हेल्थ केयर सिस्टम टू इन्फोर्स ऑन वन एक्रेडिटेड आशा वर्कर. अगर एक आशा वर्कर की बात करें तो हर 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर होने की ज़रूरत है, वन आशा वर्कर पर 1000. राइट, अगर AM नर्स की बात करें देयर शुड बी 5000 पर नर्स. ओके, and the other is at least 100 beds including bed with emergency and critical services to cater the population of 30,000 to 50,000. तो अगर 30 से 50,000 की जनसंख्या है तो वहाँ पे हमें कम से कम 100 बेड की ज़रूरत पड़ेगी. So this is how we have to take a calculation, and accordingly government and the state government, both the central government and the state government have to work. Now it is essential to hire the frontline health worker जो कि एक्चुअल में frontline health worker का काम करेंगे, सर्वेलेंस देंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, and mobilize the people in primary healthcare including the vaccination process. So this is how the things would be executed, and government need to follow this. So I try to cover this editorial comprehensively. If you understand it well, do not forget to give a thumbs up. Now, coming to the second news, that is the data of COVID infected population in India. So it has been officially
the figure has been officially released by the Minister of Health. We'll see what are the figure. Important for your General Studies paper 2 issues related to development and management of health. सो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने डेटा रिलीज किया जहाँ पे उन्होंने बताया कि 2% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ बिन अफेक्टेड बाय द कोविड-19, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 2% की बात की गई है. सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से अप्रॉक्स 2% of the population has been infected, right? So बहुत ज़्यादा population फिर भी infected है. We have a population of none less than 130 crore approximate, right? So 98% अभी जो population है वो susceptible है, vulnerable है अभी भी COVID-19 vaccines के लिए. तो क्या options हैं to protect them is the vaccination. But vaccination drive कहाँ है इंडिया में? Only 12% of the people have been vaccinated और अभी जो vaccination है बहुत state में out of stocks. So we can see the preparation of government that is going through. Now the government is said to have continued decline. I have noted the cases in 15 days. अभी कुछ 15 दिन में cases कम हुई है. पहले जो case load थी वो 17.13% थी. Now this case load is 13.3%. स्टेट की परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ ऐसे 8 स्टेट्स हैं दे हैव मोर देन 1 लाख ऑफ एक्टिव केसेस और 22 स्टेट्स हैव मोर देन 15% ऑफ द पॉजिटिविटी केस. बट कुछ स्टेट्स में लाइक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दे हैव सीन डिक्लाइन इन द कोविड-19 केसेस एंड डिक्लाइन इन द पॉजिटिविटी रेट. पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है अगर हर एक 100 में जितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर मान लो कि 10 लोग पॉजिटिव है तो उसकी वहाँ की पॉजिटिविटी रेट 10% होगी. सो इट इज़ द नंबर अपॉन 100. सो दिस इज हाउ द पॉजिटिविटी रेट इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड देयर आर 199 districts showing the continued decline in the COVID-19 cases for past 2 weeks. So definitely the graph is coming down overall. जो annual, I mean talking about the per day cases of national, अगर इंडिया लेवल पे पूरी बात करें, so this is like 2.64 on a daily basis nationally. और पहले ये 4 लाख के आसपास जा रही थी. बट we do not have to be lenient. We have to make all the strong possible efforts that we can take to overcome the third wave in the country. Now vaccines for children is again something which is very essential. अगर third wave की बात की जाए, so how we can contain that, we have to vaccinate our children because these are the most vulnerable to the third wave. So authorities ने they are looking forward how a vaccination can be created और internationally इस पे भी काम हो रही है. Internationally I mean people are working for it, they are tracking. और इंडिया में recently कोवैक्सीन ने approval लिया है. They have got the approval for the phase 2 and phase 3 clinical trial for the age group of 2 to 18, right? So ये age group के जो लोग हैं उनमें trials चल रही है and very soon within next to 12 days this entire process would start and we can expect within 2 to 3 months the vaccination for the child will also start in India. Now 2-deoxy D-glucose drug के बारे में भी बात की गई इस मीटिंग में. So the National Task Force has already asked कि जो recently DRDO ने drugs बनाई है उसको approval मिली है. Now this drugs would be given the emergency authorization already given and in June, from the first week of June, it would be made available in the hospitals only, not in the medical shops. Now how do India vaccine drive rank? अगर आप देखें the total number of people vaccinated with a single dose, US is top among the rank, followed by India, UK, Brazil, Mexico, Indonesia and Bangladesh, right? And the number of people fully vaccinated, आप US में देख सकते हो, the number of, I mean even we have not reached the half the level. This is the half level and we are lacking so much behind this, right? So the number of vaccination process in US are already completed. उन्होंने अपने mass vaccination कर लिया है. Now they are looking forward to give vaccine to other countries, not like India that हमने अभी तक vaccinate ही नहीं किया और काफ़ी लोगों को vaccine जो international obligations and XYZ citing XYZ reason we have given them, right? So this is something which was not appropriate behavior which government has shown. Government क्या कर सकती थी, इसको delay कर सकती थी. They could have requested the international community कि see we have a mass population, we will gradually moving slowly but allow us to first vaccinate our population. We are a country where most of the people are poor, but this has not actually happened, right? So this is what my personal opinion is about this government gestures or you can say initiative. Now India COVID case load की अगर बात करें vaccinations की, so the daily COVID cases you can see on the May it was around this much. And this is the daily vaccine doses. This is the daily vaccine dose of the May.
you can see the cases and you can comparatively see the differences in the cases and as well as the vaccination process. Now, the third news, US to send 80 million vaccines abroad. This is what the US is doing now. They initially didn't do any sort of sending of vaccine or selling of the vaccine or even helping. First, they have focuses on their people. The America First policy was the motto of the government. So important for your general studies paper 2, bilateral and regional grouping agreement involving India's and interest, and some points here and there may be relevant for the prelims examination as well. So recently, the US president have announced that they would be shipping 20 million doses of COVID-19 vaccines to unspecified or needy countries. जो भी ज़रूरतमंद countries उनको दी जाएगी. So actually, they are sending 80 millions. I'll tell you how this 80 million calculation goes. Now, list of the vaccination की अगर बात करें, सबसे important वहाँ पे 3 कंपनीज काम कर रही हैं, फाइजर की बायोटेक, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन. सो 3 कंपनी आर गिविंग वैक्सीन इन यूएस और उन्होंने अभी रिसेंटली तक एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है इंडिया में जिसको कोविड शील्ड के नाम से बनाया जा रहा है, कोविड शील्ड इज अ नेम गिवन बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पूरी आइडिया है वो एस्ट्राजेनिका की है, राइट. तो वील रादर कॉल इट एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, जिसको वहाँ पे अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है. यूएस ने अभी तक एस्ट्राजेनिका और यू कैन से कोविड शील्ड को अप्रूवल नहीं दिया वहाँ के सिटीजन के लिए. ना अप्रूवल अवेटिंग है वहाँ पे भी. यूएस की अगर बात करें 60 मिलियन डोजेज आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल और जो यूएस ने ऑलरेडी 20 मिलियन की शिपिंग स्टार्ट करने की बात कही है जून तक. सो दिस वुड टुगेदर कंप्राइज 80, 60 waiting plus 20 approved would be, they would be giving 80 million vaccines to entire वर्ल्ड. उसमें इंडिया एक्सपेक्टेड है कि सबसे ज़्यादा इंडिया को मिलेगी, राइट. दिस इज बिंग एंटिसिपेटेड और यूएस ने ये कहा है कि वो रशिया चाइना से ज़्यादा देंगे वैक्सीन दूसरे कंट्रीज़ को. एंड द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सेड दैट दे कुड राइज ओवरशीट एंड पुट अप द ग्रेटर रिस्क. जो भी ग्रेटर रिस्क कंट्रीज़ हैं उनको सबसे पहले ज़्यादा वैक्सीन दी जाएंगी. Although the US administration has not released the data to what number of the vaccine would be provided to each states or each country, but it is expected that India would be getting the significant proportion of the vaccines. Now the other news naming system for the virus variant. Basically, we have seen that the virus was named that B.1.167. So these names become very tough for the people. If you say that the mutation I have got is B.1.167, if you ask anyone that which sort of infection you have, you will say this, that people tend to confuse, right? So because of the reason that the WHO is working to name the virus according to the variant. जिस तरह से हमने देखा है बेसिकली साइक्लोन के अलग अलग नाम्स होते हैं, हरिकेन्स अलग अलग नाम्स हैं वर्ल्ड वाइड, तो उस तरह से वैक्सीन को भी नेम की जाएगी. सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट, they have said that WHO is working for a system of naming of the coronavirus in the way that tropical country name their storm. जिस तरह से storm को रेट की जाती है, नेमिंग की जाती है, उस तरह से वैक्सीन को यहाँ पे की जाएगी. And this initiative is not to denounce undistinctive countries or making them sequencing as a result of public. तो कई बार ऐसा होता है किसी कंट्री के नाम पे उस कंट्री की बदनामी भी होती है. We'll see how India has defended that. तो ईजियर टू रिमेंबर, जब कोई नाम मिल जाएगी तो वो उनको याद करना बहुत आसान होगा जनरल पब्लिक के लिए, बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट दैट एजुकेटेड इन इंडिया स्पेसिफिकली. सो द लॉन्ग नंबर्स इज ऑल्सो टफ फॉर अदर पीपल ऑल्सो. सो WHO ने कहा है कि हेल्थ और साइंस एजेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर वर्किंग, ICM और CDC के साथ काम कर रहे हैं वो, ताकि जो लीनिएज के नाम पे वो उसकी नेमिंग कर पाएँ. Now with the combination of letters and the name, they would be giving a relationship between the variants. Example के डॉट पे जैसे मैंने आपको बताया B.1.7, B.1617, that suggests certain mutation as well as clue in the evolutionary history. So for general people, it would be common name. For scientific temperament people, for scientists, they would be referring to these name only. Now virus वेरिएंट जियोग्राफिकल टैगिंग की जाएगी, उसके रीजन के हिसाब से उनकी टैगिंग की जाएगी, वहाँ के हिसाब से उनको नाम दिया जाएगा. जिस तरह से फर्स्ट सैंपल आइसोलेट किए गए थे वेस्ट नाइल में रिगार्डिंग द वायरस कॉल्ड इबोला, तो इबोला वहाँ नाम रखी गई थी. अकॉर्डिंगली हर वायरस, जैसे यूके वेरिएंट है, राइट. सो बाय यूके वी आर नेमिंग द एंटायर कंट्री. दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. साउथ अफ्रीका वी आर नेमिंग दिस वेरिएंट. सो अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह से नाम दिए जाएंगे ताकि किसी कंट्री के नाम नहीं लिए जाए.
उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने कंडेम किया था इस तरह की जो B.1617 है उसको इंडियन वेरिएंट बोली गई थी. सो इंटरनेशनली जो मीडिया में जब ये बातें हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको डिफाइन किया कि इट शुड नॉट बी नेम्ड एज इंडियन वेरिएंट, इट शुड बी सम अदर नेम शुड बी गिवन, राइट. So this is why WHO is working so that they could name according to their region and according to their lineage. Now, roadmap to overcome the pandemic challenges. Yesterday only the Prime Minister has held a meeting with the district magistrate of the states. बहुत सारे अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उन्होंने मीटिंग की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एंड हाउ टू कंटेन दिस वायरस, व्हाट शुड बी द रोड मैप दे हैव डिस्कस्ड. So government policies and intervention in development of various sector, and this can again be important for your case study. जनरल स्टडीज पेपर 4 में जब केस स्टडी की बात हो तो इस तरह के सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे. Now the Prime Minister has recently held a virtual interaction with the official, that is the district magistrate, deputy collector or magistrate you can see, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19, राइट. सो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जिनके साथ पार्टिसिपेशन हुई थी दैट इंक्लूड कर्नाटका, बिहार, आसाम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, राइट. So these sort of official were available and with them the Prime Minister has interacted, he has asked the roadmap and he has suggested his point of view, right. The Prime Minister has said that pandemic has posed a big challenge in our country and it should be it's a time that we should need to stress upon the unprecedented time, and he stressed that an individual district need to take step to overcome the pandemic. हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपने हिसाब से काम करने की ज़रूरत है, जो सूटेबिलिटी हो अकॉर्डिंगली दे हैव टू वर्क. एंड ही सेड दैट देयर इज अ नीड टू कंसिस्टेंटली एम्फसाइज टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन. सो ये तीन बातें बहुत पहले फर्स्ट वेव से कही जा रही है, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी फॉलो की जाए. नाउ स्टेटस ऑफ स्टेट्स की अगर बात करें, कुछ स्टेट्स जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री की डेटा के अकॉर्डिंगली आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटका, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड and Tamil Nadu, right? There's no Madhya Pradesh, there is only Arunachal Pradesh. So apart from these states, the cases are declining in India, and however the number of COVID-19 that have increased across the country. वैक्सीनेशन ड्राइव इज अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कंटिन्यूड एफर्ट होनी चाहिए सो दैट वी कैन सप्लाई वैक्सीन टू द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अ मास वैक्सीनेशन ड्राइव वेरी सून. दे वुड बी स्ट्रीम लाइनिंग टू गिव द वैक्सीन टू द स्टेट. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि दे आर मेकिंग अटेम्प्ट टू शेड्यूल द वैक्सीनेशन नेक्स्ट 15 days ताकि सारे स्टेट्स जो भी वैक्सीन की शॉर्टेज में चल रहे हैं उनको वैक्सीन मिले. और दूसरी बात जो उन्होंने फोकस की, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट वी शुड स्टॉप द वैक्सीन वेस्टेज. तो वेस्टेज को भी कम करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. नाउ कमिंग टू द MCQs क्वेश्चन ऑफ द डे. Before I proceed with the MCQs question, there is an answer for yesterday questions. So for the first question, the correct option is A. For the second question, the correct option is A. So for both of the questions that we have asked, the correct answer is A only. Now the first question for today, the PM Atmanirbhar Swasth Bharat scheme. What is the aim of the scheme? It aims to provide the care insurance to people from BPL categories, and it was recently announced. It was recently announced by Union Budget 2021-2022. So what you have to do, you have to just select the correct option and write the answer in the comment section down below. Many of you are participating, some of you are not writing the answer. Do write and let us know how many of you know the correct answers. Now the second question with regard to National Hydrogen Energy Mission. Which among the following statement is correct? The mission will capitalize on hydrogen for cleaner fuel alternative options, and it will have focus on generation of hydrogen from green resources. So again, name the correct answer, A, B, C, D, whatever you feel is the correct. You can let us know in the comment section down below. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the questions. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.